हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में बात करें लीवर के बारे में। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये बॉडी में होता कहाँ पे? एब्डोमिनल रीजन में, बिलो टू द डायफ्राम। दैट इज़ द राइट लंबर रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, एपीगैस्ट्रिक रीजन एंड द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन. So liver having a two lobes, that is a large right lobe and the small left lobe. फिफ्थ सिक्स देखोगे तो राइट लोब होती है, वन से देखो तो लेफ्ट लोब होती है. इस लोब को अलग करने वाले एक लिगामेंट होते हैं इंटीरियरली, उसको बोलते हैं हम लोग फैल्सीफॉर्म लिगामेंट. दैट इज़ द लिगामेंट ऑफ पेरिटोनियम. सो दिस इज द फैल्सीफॉर्म लिगामेंट इंटीरियरली जो लीवर को राइट लोब में और लेफ्ट लोब में डिवाइड कर रहा है. पोस्टीरियरली देखोगे यहाँ पे, सो देयर इज अ फीसर ग्रुप दिखाई दे रहा है. इस ग्रुप में लाई करती है लिगामेंटम वेनोसम, जो रिमिनेंट किसकी है? डक्टस वेनोसस की. और इंफीरियरली होती है लिगामेंटम टेरिस, जो रिमिनेंट है ऑब्लिकेट अम्बलाइकल, लेफ्ट अम्बलाइकल वेन की. ओके, सो दिस इज द लेफ्ट लोब, दिस इज द राइट लोब. नाउ द एनाटोमिकल पोजिशन. अगर इस लीवर को एनाटोमिकल पोजिशन कैसे रखेंगे? तो पहले हेड को स्ट्रेट कर लेंगे. आप पर यहाँ देखोगे ऊपर एक सुपीरियरली देखोगे एक ओपनिंग दिखाई दे रहा है. दिस ओपनिंग फॉर द इंफीरियर वेना कावा. इसको अपने तरफ टील्ड करते चले जाना है. जब तक टील्ड करना है, जब तक आप देखोगे इंफीरियर वेना कावा आप देखोगे तो नीचे की सरफेस दिखाई देगा. दिस इज द एनाटोमिकल पोजिशन ऑफ द लीवर. ओके, सो नाउ द सरफेसेस एंड बॉर्डर ऑफ द लीवर. लीवर में होती है 5 सरफेस. So this is the superior surface of the liver, this is the anterior surface of the liver, this is the right surface of the liver. क्या सरफेस तीन हो गए ना? सुपीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस, राइट सरफेस एंड दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीवर. जब पलटा के देखेंगे यहाँ पे ऐसे, इसको बोलते हैं हम लोग पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीवर एंड दिस इज द इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर. सो लीवर हैविंग अ 5 सरफेस. वन प्रोमिनेंट बॉर्डर, सीधा इंफीरियर बॉर्डर इज अ प्रोमिनेंट बॉर्डर. उस पर आपको नोचेज दिखाई देगा. एक को बोलते हैं नोचेज फॉर द लिगामेंटम टेरिस. दिस इज द नोचेज फॉर द लिगामेंटम टेरिस एंड दिस इज द सेकेंड सिस्टिक नोच फॉर द गॉल ब्लैडर. ओके, फंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर. द सिस्टिक नोच, दिस इज द nose for the ligamentum teres which is present on the inferior border. Inferior border is a sharp. So having a how many surface? 5 surface. The superior surface of the liver is related on the right side by the right lungs and the right pleura, left side by the left lungs and the left pleura. In the medial part there is a concavity, and this concavity there is a pericardium along with heart. So this is the diaphragmatic surface and this whole surface is related to the diaphragm. Okay, and the right surface, this right surface of the liver related to the 7 to 11th ribs. Okay, so the some part of the right lobe, right lungs is extend up to the 8 ribs, the 8th costal margin, and 8 to 10 costal margin. There is a costodiaphragmatic pleura and below to the diaphragm. So this is the relation of the right surface of the liver. Now the anterior surface related to the in the midline, little bit right to the falciform ligament, the xiphoid process and the anterior abdominal wall. On the posterior surface you can see there is a fossa. There is a groove for the inferior vena cava which is the inferior vena cava. This is the caudate lobe and there is a base area of liver. We will discuss later on the base about the base area of the liver. Now the inferior surface of the liver. The inferior surface of the liver is from left lobe to right lobe. This is the gastric, this is the stomach, this is the gastric part of the stomach, this is the pyloric part above the caudate lobe. This is the accessory lobe. This is the caudate lobe of the liver. This is the pyloric part of the stomach, and this is the gallbladder. This is the fossa for the gallbladder. This is the impression for the gallbladder. Okay, and the over the gallbladder is the duodenum, and the right to the duodenum. This is the hepatic flexure of the colon, and right to the hepatic flexure of the colon there is a right kidney along with the right suprarenal gland. So the inferior surface of the liver. Okay, now the peritoneal relation. Okay, so this is the intraperitoneal organ, but the some part there is a reflection of the peritoneum. Okay, so anteriorly this reflection is from the falciform ligament. This is the folds of peritoneum is from the
falciform ligament, and superiorly, so this is the diaphragmatic surface, or the this is the this space surface related to the peritoneum. On the posterior aspect of the liver, you can see there is a left and right triangular ligament, superior coronary ligament from the left lobe. So there is a superior left triangular ligament, and rectangular ligament extend from the fissure, that is a fissure for the ligamentum venosum, and the which cover the porta hepatis. Okay, so this is the porta hepatis, which cover the porta hepatis and which bounded the boundary of the porta hepatis, along with the right margin of the caudate lobe, which is extend and it also cover the whole of the inferior vena cava. Inferior vena cava के posteriorly जाके which is continue as a inferior coronary ligament. So this is the inferior coronary ligament, which is reflection from the liver to the right kidney along the suprarenal gland. Okay, and this is the left triangular ligament, which is along with the falciform ligament, which is continue on the superior surface of the liver and form the superior coronary ligament. So this is the superior coronary ligament. The superior and inferior coronary ligament join to form a right triangular ligament. So the area between the superior and inferior coronary ligament and the right triangular ligament is known as the bare area of the liver. Okay, also the inferior groove for the inferior vena cava is also the bare area of the liver, and the fossa for the gallbladder is also for the bare area of the liver. Okay, so this is the peritoneal reflection of the reflection of the liver or ligament of the liver. Okay, so this is all about the external feature of the liver along the peritoneal relation and the visceral relation of the liver. Thank you for watching this video.